टनल ड्रायर है, जिसमें हम लोग इसका निर्माण ग्रीन लाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने किया है। This is really make me think twice that how can a frugal innovation help towards greening, towards sustainability is this solar dryer. It's a very novel concept. I remember Subodh was telling me long back that they saw it somewhere for I think agri industry or somewhere. You saw it and they plan to deploy this thing in our industry. And this thing, if it works, can really open new vistas, can really open new areas for its application, because our need for energy in many places is very high, and this can really open new avenues for us to become green, new avenues for us to be more sustainable, and really aligning to the topic of sustainability and really aligning and becoming green while helping our customers meet their requirement for energy transition. So we can always act as a model to showcase to our customers on what we do for our own energy management, and then go and tell them that we have solutions which can help them to manage their energy better. तकरीबन 13,000 यूनिट्स क्या होता है, 500 यूनिट पर डे हम आपको सेल करेंगे। और अगर 500 यूनिट मुझे पीवी से जनरेट करते हैं तो मुझे 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लगता था। अभी आपने 700-750 किलोवाट का ये किया, और दिस ड्रायर विल जनरेट 125 किलोवाट का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इसमें सेव करेगा। तो इट विल जनरेट थर्मल एनर्जी, जो हमको आपका जो पाउडर आता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है, टू मॉइस्चर निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो साइंटिस्ट कंज्यूम अराउंड 500 यूनिट्स होने चाहिए, वो आपका ड्रायर से इधर जाकर उधर निकलना है 125 किलोवाट।